नमस्कार आपण समस्त को यही वीडियो बहुत बहुत स्वागत। तो आज वीडियो में सहित डिस्कस द ट्रेडिशनल अप्रोचेस इन द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स रो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको सेट करी जो थी कि आम कौन देखा सब कौन अप्रोचेस रही आमर जपर कि फिलोसफिकल अप्रोच कौन हिस्टोरिकल अप्रोच कौन ठीक से हीपरी केतक अप्रोच आम डिस्कसन करवा आउ जो अप्रोच गुड़िक रही है आपंकर कौन 3 मार्क्स आसपे कि 2 मार्क्स हेल्पफुल हम। तो वीडियो आप बहुत इंपोर्टेंट है आ वीडियो आगे मुझे कहबी जे आप पीडीएफ बा नोट्स टी किपर भाव पाइपर। चलते स्टार्ट करवा। तो फास्ट आम देखा द ट्रेडिशनल अप्रोचेस वेर ब्रॉडली प्रीडोमिनेंट टिल द ऑक्युरेंस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। मैंने सेकेंड वर्ल्ड वार पर जो सब अप्रोचेस मान को सब डोमिनेंट आम कर दिस अप्रोचेस वेर मेनली एसोसिएटेड विथ द traditional outlook of politics which underline the study of the state and government माने study of state and government comparative politics तो politics माने state government रहिबो। next कोन ना the approaches were normative and principal, therefore the supporters of the traditional approaches stress various forms such as what ought to be or should be rather than what is। next देखिबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोचेस। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस रो किछि भी चरित्र गुड देखा कैरेक्टर देखा चरित्र देखा। तो फास्ट कौन ना ट्रेडिशनल अप्रोचेस आर मोस्टली नॉर्मेटिव एंड स्ट्रेस ऑन द वेरियस ऑफ पॉलिटिक्स प्रोमिनेंस इज ऑन द स्टडी ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। ट्रेडिशनल अप्रोचेस मेक वेरी लिटिल अटेम्प्ट टू रिलेट थ्योरी एंड रिसर्च। These approaches consider that the science fact and values are closely interlinked। study मैंने कौन लिंक अच्छी studies in political science can never be scientific। there are many types of traditional approaches। traditional approach कौन फास्ट टाइम देखिए characteristics बर्तमान टाइप्स को देखिए। तो टाइप्स कौन कौन रही ना फास्ट हूँ फिलोसफिकल अप्रोच। तो फिलोसफिकल अप्रोच कौन ना फिलोसफिकल अप्रोच इज कन्वेंशनल अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिक्स। The oldest approach to study of politics is philosophical approach। philosophical approach टी होची कोन ना सबुठ हैला oldest approach बट दृष्टिकोण। philosophy is the study or science of truth or principles underlying all knowledge and being। The main aim of philosophical approach is to evaluate the consequence in a logical and scientific manner। माने कौन जो रही आम ताकि लॉजिकल और साइंटिफिक मैनर देखि परबा एवलुएट कर परबा। द पर्पस ऑफ फिलोसॉफिकल अप्रोच इज टू एक्सप्लेन द वर्ड्स एंड टर्म्स यूज्ड बाय द पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। वेन डायक ओपेन दैट फिलोसॉफी डिनर्स थॉट अबाउट थॉट। से कहते फिलोसफी कौन करना से डो अबाउट थॉट थॉट विषय से आमको कहूँ हिस्टोरिकल अप्रोच। बर्तमान हिस्टोरिकल अप्रोच कौन ना दिस अप्रोच स्टेट्स दैट अ पॉलिटिकल थ्योरी कैन बी ओनली अंडरस्टूड व्हेन द हिस्टोरिकल फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। इट हाइलाइट्स ऑन द स्टडी ऑफ एवरी पॉलिटिकल रियलिटी टू एनालाइज। ए कौन ना आम हिस्ट्री देखिले तो एनालाइज कले पॉलिटिकल थ्योरिस्ट लाइक मैकियावेली साबेन and Dunning believe that politics and history are strongly interrelated। माने कौन हिस्ट्री और राजनीति ये दुटा इतिहास और राजनीति पूरा कौन पूरा स्ट्रांगली मैंने पूरा कहते जोर दे कहते जे इंटर रिलेटेड अच्छी कि संपर्क अच्छी या भितर। नेक्स्ट मेन attribute of historical approach is that history as a written or recorded subject and focus on the past events। हिस्ट्री कौन कहते हैं सब्जेक्ट जहाँकि पास्ट अर्थर घटना को से फोकस करछि। हिस्ट्री इज द स्टोर हाउस ऑफ इवेंट्स। एटा कौन स्टोर हाउस गोटे माने घटना सब गोटे स्टोर हाउस। रिसोर्सेस कम टू नो हाउ मेन वाज इन द पास्ट एंड व्हाट इज नाउ। माने कौन पूर्वे किपर होइथिले वर्तमान आम किपर ताको हिस्टोरिकल अप्रोच भल भाबे ठीक से एनालाइज करछि। जहाँकू कि आमर पॉलिटिकल थ्योरी देखिले जो मैकियावेली साबेन डनिंग कहले से विश्वास करती जे पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री स्ट्रांगली interrelated। next institutional approach। तो institutional approaches are ancient and important approach to study of political science। these approaches mainly deal with the formal aspect to political structure like legislature executive judiciary institution से तो सेति आमर लेजिस्लेचर रहिबो
executive रहिबो judiciary रहिबो it focus on the rules of the political system the powers of the various institution the legislative bodies and how the constitution work माने कोन ना पावर सब इंस्टीट्यूशन रो ता सहित किपरि जो हम constitution किपरि कार्य करछि more correctly an institution has been regarded as offices and agencies arranged in the hierarchy each agency having certain in power next legal approach तो legal approach कहले हम कोन बुझिया ना in the realm of traditional approaches this is a legal or judicial approach this approach consider the state as the central organization for the certain and enforcement of laws माने कौन जुडिशियल अप्रोच लीगल रही तो आम आईन के ऊपर कार्य कला कौन ताको कि पढ़ाबे कौन इन्फोर्समेंट करा गला सब आईन को देयरफॉर दिस अप्रोच इज एसोसिएटेड विथ द लीगल प्रोसेस लीगल बॉडी और लीगल इंस्टीट्यूशन सब प्रोसेस दे जिवो इन जुडिशियरी मध्य नेक्स्ट इन दिस अप्रोच एही अप्रोच रे द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज मिक्सड विथ लीगल प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशन जो कौन ना स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स लीगल प्रोसेस सहित और संस्था मध्य सब कौन मिक्सिंग प्रोसेस रची This approach treats the state primarily as an organization for creation and enforcement of law. Next देखिबा criticism of traditional approach. Traditional approach ता criticism देखिबा the traditional approaches have gloomy unsuccessful to identify the role of the individuals who are important in modeling and remodeling shape and nature of politics. In fact, individuals who are important players of both national and आम कौन इंडिविजुअल मैंने प्रत्येक समस्ते आम नेशनल लेवल रो कि इंटरनेशनल लेवल रो आम सब इंपोर्टेंट रोल प्ले करछंती पॉलिटिक्स रे द फोकस इज डायरेक्टेड टू द इंस्टीट्यूशन किंतु हम फोकस कोडा हम इंस्टीट्यूशन को फोकस कर जो इंस्टीट्यूशन लेजिस्लेटिव हे जाऊ न एग्जीक्यूटिव हे जाऊ न जुडिशियरी हे जाऊ इट आउटस्टैंडिंग that in all the institution there are individual who control for the structure functions and other aspect the definition politics of the study of institution is nothing but an overstatement or a travesty of truth other political researchers argue that traditional approaches descriptive politics does not rule out description but it is also analytical it propose is study to depth of every incident माने कोन आर प्रपोज थाउची हम पूरा गभीर को जिया प्रत्येक घटना इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेशन वांट टू नो नॉट ओनली occurrence but also why a particular incident occurs at a particular time देखिए जे काहे गोटे पार्टिकुलर घटना डी गोटे पार्टिकुलर समय काहे केला सो डीप जिबा डीप गले जानि परबा नेक्स्ट रही द ट्रेडिशनल अप्रोच अजे one third of the analyze politics is looking for the analytical of political institution of the third world countries माने कोन हम थर्ड वर्ल्ड चलची particularly the countries which not follow the western political system it is assumed that the traditional analysis is inappropriate for all type of political system बोथ वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न माने पाश्चात्य सभ्यता हो नॉन पाश्चात्य सभ्यता हो समस्त को कोन कहछ ट्रेडिशनल अप्रोच माने जो एनालिटिकल इनो अप्रिशिएट करछि टू रिकम्पेंस दिस डेफिशिएंसी द पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऑफ द पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर पीरियड हैव डेवलप्ड ए जनरल सिस्टम अप्रोच माने कोन जनरल सिस्टम डेवलप करछंती व्हिच इज क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव The outstanding feature of traditional approaches is that is value leader system मतलब leader system गोटे कौन outstanding गोटे feature गोटे रही तो ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट आम देखा ना राइट डाउन द मॉडर्न अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच देखले तो नेक्स्ट वीडियो में आपन सहित मॉडर्न अप्रोच लॉन्ग क्वेश्चन आनी थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो जदि आप नोट्स चाहती डिस्क्रिप्शन में मुझे टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे देछि सेठा आपन जॉइन होंतु आपन नोट्स मिल जिवो।